Namaste. I welcome you all to our today's marathon session on other financial services of our unit 26.1 and 26.2 of our subject retail banking and wealth management. आज के लाइव डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स सो दैट वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरी इमीडिएटली। तो जैसे आपको अवगत है, हम सीआईबी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें आप आपके फ्रेंड्स जो सीआईबी को अपीयर कर रहे हैं उन्हीं को कन्वे कर दीजिए कि दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट ऑन डेली बेसिस, ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकेंगे। साथ साथ हम जेआईबी के लिए भी बचे हुए दिन जो है रेगुलर बेसिस पे आर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर लिए क्लासेस कंडक्ट करेंगे। उसी में आप पार्टिसिपेट कर दीजिए ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी क्वेश्चन आंसर्स के भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो विद दिस वी विल स्टार्ट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज? Banks are permitted to undertake certain banks are permitted to undertake certain eligible financial services or para-banking activities either departmentally or by setting up subsidiaries. अगर अभी आप ब्रांचेस को विजिट करते हो एंड अगर आप कोई बैंक के स्टाफ के पास या बैंक ऑफिशियल के पास जाके इंक्वायरी करते हो कि आपको यू वांट टू इन्वेस्ट सम मनी, आपके पास अगर कोई एक्सेस फंड है वो आप सर बोर्ड इन्वेस्ट। नहीं आ रहा है। सर हेलो। बोर्ड नहीं आ रहा है। सर अब क्या नहीं? बोर्ड नहीं आ रहा है, आपकी पिक्चर आ रही है, बोर्ड मेरे नहीं आ रहा है। ये नहीं आ जी रहा है आपको? जी, पीपीटी स्क्रीन नहीं, नहीं आ रही है। पीपीटी नहीं नहीं, आ रही है। पीपीटी नहीं आ रही है। जी जी। या प्लीज। अब आ रही है? नो। अब आ रही है? नो। Okay. So what we will do, we will discontinue it and we will start it immediately. ठीक है? ओके ओके That will be ओके better instead of doing this, na? ओके Okay. ओके। Please wait because your system is not showing the PPT. So we'll resolve the issue and we'll come back. Now, are you able to see it? यस सर। आ रहा है ना अभी? दोनों आ रहा है ना? यस मेरा सर। मेरा भी जी पिक्चर जी एंड पीपीटी जी जी दोनों आ जी। रहा है ना? सो आई यस कैन यस कंटिन्यू यस इट सर। मीन। ओके। ओके ओके चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, विल स्टार्ट फ्रॉम द ओके बिगिनिंग। ओके।
So we will start from the beginning again. जो जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था कि अगर अभी हम बैंक में जाते हैं एंड अगर आप बैंक के कोई ऑफिशियल को और बैंक के मैनेजर को अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक्सेस फंड्स है, इमीडिएटली दे विल स्टार्ट फॉर गिविंग यू एन एडवाइस, दैट इज सर अगर आपके पास एक्सेस फंड्स है, व्हाई कांट यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, व्हाई कांट यू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, why can't you invest in gold bonds? And we are offering all these services. तो ये जो ऑल दिस सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया, बैंक जो अदर सर्विसेज ऑफर कर रही है, दीज आर नोन एज द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, दीज आर ऑल्सो नोन एज द पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। एंड ये जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है, these are carried out either through internal department by forming a separate department, और वो अपनी एक सेपरेट सब्सिडरी फॉर्म करके बैंक्स वो सर्विस ऑफर करती है। सो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इंक्लूड बैंक एश्योरेंस, डिपॉजिटरी सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, which has helped to increase the reach of the banks to vast segment of the population, to bring them into the fold of the basic financial services, and also good source of revenue which increases the bottom line of the bank। अभी ये सवाल आ जाता है कि बैंक की अपनी कोर एक्टिविटीज अलग अलग एक्टिविटीज है, जैसे मेन उनका पर्पस वही है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, तो बैंक ये एक्टिविटीज क्यों करती है? बैंक का पर्पस यही है, बिकॉज ऑफ दिस पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज, बैंक अपने जो कस्टमर सेगमेंट जो है उसका स्कोप बढ़ा सकती है, बैंक काफी लोगों के साथ अप्रोच कर सकती है, जिसकी वजह से उनका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा। एंड वंस कस्टमर बेस इज इंक्रीज, they will be able to increase or they will be able to sell their core business to these customers। एंड जिसकी वजह से जैसे जैसे बैंक का बिजनेस उस कस्टमर के साथ बढ़ जाएगा, बैंक को एक तो ये पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज से बैंक इज अर्निंग सम फी बेस्ड इनकम, इन एडिशन टू दैट बिकॉज ऑफ increase in the number of customers, bank will be able to sell their other products also, and which will ultimately increase their profitability, which will ultimately increase their bottom line. That is the main purpose of initiating the para banking activity। इन एडिशन टू दैट, अगर कोई कस्टमर को मालूम है कि मेरी पर्टिकुलर बैंक जो है वो मेरी कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई करती है, इन दैट केस कस्टमर विल बिकम ए लॉयल कस्टमर एंड ही विल नेवर थिंक ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम योर बैंक टू अदर बैंक, विच विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक। Out of various services required by the customers, bank can offer some of the services on a proprietary model, but other services like insurance, mutual fund schemes, etc., could not be offered from the bank's own products due to regulatory restrictions. But banks can offer the above services through relevant service providers through agency arrangements with them, and banks are permitted to offer these services by RBI by acting as a corporate। ये दोनों मैंने deliberately combined statement बना दिया है, क्योंकि बैंक जो अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे बैंक एश्योरेंस हो, डिपॉजिटरी सर्विसेज हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या एनी सेल ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स हो, मेनी ऑफ द सर्विसेज जो है इसमें से बैंक खुद के प्रोडक्ट करके नहीं बेच सकती है। इन दैट केस व्हाट बैंक विल डू, बैंक उनके पास से एजेंसी लेगी, एंड दैट एजेंसी एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट आइदर थ्रू डिपार्टमेंटली या बाय फॉर्मिंग देयर ओन सब्सिडरी। सो एंड अगर उनको इस तरह से एजेंसी अरेंजमेंट करना है, इन दैट केस बैंक का जो रोल रहेगा, दैट विल बी रोल, the role will be as that of a corporate agent। Again, it is very important, the role is of a corporate agent। नाउ वी विल सी, अभी तक हमने जनरल स्टडी की थी, जनरल कौन सी एक्टिविटीज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में आती है। नाउ वी विल गो फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, दैट इज म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस में अभी तक हमने व्हाट इज म्यूचुअल फंड दैट वी हैव स्टडीड। नाउ वी विल सी हाउ द बैंक्स आर functioning in mutual fund business। A mutual fund is a form of a collective instrument that pools the saving from a number of investors who share a common financial goal।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉमन पर्पस है, वो कॉमन पर्पस लेके एक पूल बनाते हैं, एंड वो पूल में जो फंड्स इकट्ठा हो जाएंगे, दे विल इन्वेस्ट इन द सेट इन दैट सिक्योरिटीज फॉर अचीविंग द स्पेसिफिक गोल। तो म्यूचुअल फंड इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, दैट इज सब लोगों का मिलके एक जो पूल बन जाता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट दैट पूल द सेविंग्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स who share a common financial goal. The combined holdings of the mutual fund are known as its portfolio, and the money which is collected by an AMC, asset management company, that is mutual fund company, which is a part of the mutual fund, is invested in capital market instruments such as shares, debentures, and other securities. So what mutual fund is doing? म्यूचुअल फंड में जो सेविंग इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके जो पूल बन जाता है, वो जो मनी जो है, दैट कलेक्टेड सम जो है, वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड फॉर विच इन्वेस्टर्स हैव कम। अगर म्यूचुअल फंड स्कीम अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, दे विल इन्वेस्ट इन इक्विटीज। If it is debt oriented scheme, they will invest in debt instruments, or if it is in money market instruments, they will invest in money market instruments. तो इसके लिए जो म्यूचुअल फंड जब होल्डिंग इन्वेस्ट करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज, एंड उनके नाम पे जब वो सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाती है, द कंबाइंड लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज जो रहेगा, कंबाइंड होल्डिंग जो रहेगी, उसको इट्स पोर्टफोलियो कहा जाता है। आप अगर कोई एडवर्टाइजमेंट भी देख लीजिए या कोई साइट पे जाके देख लीजिए, कोई म्यूचुअल फंड का अगर आप पोर्टफोलियो क्या है ये अगर देख लेंगे, तो whatever may be the shares or whatever may be the debentures, whatever may be the securities that are being held by the mutual fund are indicated in its portfolio. The asset management company issues units to the investors, that is unit holders, in proportion to their investment. I think मेरे लिए बताने की जरूरत नहीं है, many of us must be having investment in mutual fund. म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड इज परचेसिंग और इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स, डिवेंचर्स, और वट एवर में बी द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। वो जो सिक्योरिटीज है वो म्यूचुअल फंड अपने नाम पे ट्रांसफर करती है, एंड जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स इशू कर देते हैं, एंड दीज यूनिट्स आर इशूड एट their net asset value, that is NAV. It is mandatory for AMC to register themselves with the SEBI, which regulates the security markets and mutual funds in India. It is again very important. Asset management company जो है, जो म्यूचुअल फंड कंडक्ट करती है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी म्यूचुअल फंड के साइलेंट फीचर्स क्या है? जस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लिक्विडिटी, सिंप्लिसिटी, चॉइस ऑफ स्कीम, एंड टैक्स बेनिफिट्स। म्यूचुअल फंड जो मैनेजमेंट रहती है, दे आर मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। उसके लिए फंड मैनेजर्स हो, मार्केटिंग हो, एक्सपर्ट्स को वो अपॉइंट करती है, जिसकी वजह से वो परफेक्टली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज करती है, साथ साथ पूल बनने की वजह से उनको जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल जो बेनिफिट रहता है, उसका बेनिफिट जो होता है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। साथ साथ म्यूचुअल फंड्स डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम, लिक्विडिटी, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के बाद जितने भी उसके पास यूनिट्स है, वो इमीडिएटली और कंफर्टेबली लिक्विडेट कर सकता है, एंड देयर इज अ सिंपल प्रोसीजर फॉर दैट। And in some of the mutual funds, tax benefit is also available for the investors. What are the types of mutual fund? What are the types of mutual fund? Every fund has a specific goal that guides its choice of assets
where it invests and the strategies it follows. हर एक म्यूचुअल फंड जो फॉर्म किया जाता है वो एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करके फॉर्म किया जाता है, एंड जो उन्होंने एज पर देयर गोल उनका जो एसेट्स है वो डिसाइड करते हैं कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक एसेट्स फॉर विच they have collected the sum from their investors. So at fundamental level, this is very important. At basic level, there are three variants of mutual funds. फंडामेंटल लेवल पे, बेसिक लेवल पे तीन तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं. कौन से हैं? फर्स्ट इज इक्विटी फंड. एक तो इक्विटी फंड स्टॉक में, जो जो इक्विटी फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. फिक्स इनकम फंड्स, जो बॉन्ड्स में या जो सिक्योरिटीज से उनको फिक्स इनकम मिलता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं. एंड थर्ड इज मनी मार्केट फंड्स, दैट इज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा. ऑल म्यूचुअल फंड्स आर वेरिएंट्स ऑफ दिस थ्री एसेट क्लास. आप कोई भी म्यूचुअल फंड निकालिए, वो इट विल इन्वेस्ट इन आइदर ऑफ दिस थ्री क्लासेस. आइदर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, either it will be a fixed income fund or it will be a money market fund. So equity funds that invest in fast growing companies are known as growth fund. एक बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, what is the meaning of growth fund? ग्रोथ, जो कंपनी जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज करके आइडेंटिफाई की जाती है उसमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ फंड, एक इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि आवर स्कीम, आवर एज पर आवर पॉलिसी वी विल इन्वेस्ट इन द कंपनीज विच आर ग्रोथ ओरिएंटेड. सो दिस इज नोन एज द ग्रोथ फंड. Equity funds invest only in companies of the same sector region are known as a specialty or sector fund. In case of sector fund, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो स्पेसिफिक सेक्टर में ही किया जाता है. The shares falling under the category of the specific sector, उसी में इन्वेस्ट किया जाएगा इन केस ऑफ सेक्टर फंड. अभी आपने देखा होगा काफी बैंकों ने डिफेंस सेक्टर फंड लॉन्च किया था. इट मीन्स जो कंपनीज डिफेंस सेक्टर कैटेगरी में खुद को क्लासिफाई करती है, उसी कंपनी में इस फंड में जो फंड्स कलेक्ट हुए हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इट इज मैंडेटरी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज ओनली. Mutual funds can also be classified as open-ended or close-ended funds, depending upon the maturity date of the fund. म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी डेट तक के उसको ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड करके कंसीडर किया जाता है. मेरे हिसाब, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये जो नाम ही इंडिकेट करता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन एंडेड. ओपन एंडेड का मतलब इसको मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये हमेशा ओपन रहेगा. वेयर एज क्लोज एंडेड फंड्स मींस उसको स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट रहेगी. सो ये नाम से ही आप समझ सकते हो, नाम से ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओपन एंडेड फंड्स डज नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट. The price at which purchase and redemption transaction takes place in mutual fund are based on the NAV of the fund. ये already मैंने आपको बता दिया है. We have already discussed this. Now we are coming to the close-ended funds run for a specific period. On the specified maturity date, all units are redeemed and the scheme will be closed. Investors can trade the units at the price prevailing in the stock exchange. Close-ended funds में क्या होगा? तो इनिशियली जब फंड्स डिक्लेयर करेंगे तभी उसकी व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फंड्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द ड्यू डेट. whatever may be the securities that are being held by the mutual fund, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, एंड जो फंड्स आ जाएंगे that will be share among all the investors. All units are redeemed and the scheme will be closed. Third type of fund is interval funds. First is open-ended, second is close-ended, third is interval fund. Interval funds का मतलब है, name itself indicate there will be a specific interval, there is a specific time period during which only investor can purchase the units. Interval fund is a mutual fund wherein the fund houses allows to purchase the units
ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड। वो पहले ही बताते हैं कि आपको अगर इंटरवल फंड में कोई ट्रांजेक्शन करना है तो आप वो स्पेसिफिक पीरियड में ही करेंगे। These interval funds जो है, these funds might invest in both equities and debt securities, but they mostly invest in debt instruments. So interval funds की जो priority है वो debt instrument की है। क्यों? Because वो भी अपनी investment करते हैं। They are doing investment on the basis or by considering the period which is available for them. Interval funds are the perfect combination of both close-ended funds and open-ended funds. Again, this is very important from our exam point of view. Like close-ended funds, investors can't trade units frequently in interval funds. ये देखिए, क्लोज एंडेड फंड्स में भी इन्वेस्टर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन दैट फंड। So these funds may be listed on a stock exchange and investors can redeem units during the specific period at the current NAV. Already हमने डिस्कस किया हुआ है। What is again in respect of interval funds also have similarities with fixed maturity plans। एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। Interval funds have similarities with fixed maturity plans, and firstly, investors money remain invested for a fixed tenure and the investment cannot be redeemed before maturity। So this is the similarity between interval funds एंड फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ एक तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो फिक्स पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एंड जब तक मैच्योरिटी नहीं होती है तब तक आप इसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। सो इंटरवल पीरियड में यू कैन गो फॉर परचेस ऑफ दैट, लेकिन आपका रिडम्पशन जो है वो मैच्योरिटी के पहले नहीं किया जा सकता है। Normally, they allocate investors' money in securities that is aligned with the fund's maturity, creating a strong investment strategy for better return। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाउ दे इन्वेस्ट। मान लो इंटरवल फंड XYZ ने अपनी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल डिसाइड किया होगा, एंड इंटरवल पीरियड इज आफ्टर एवरी 1 year। व्हाट दे विल डू, फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड उनके पास जो इन्वेस्टमेंट आया होगा, दे विल इन्वेस्ट विद 5 years मैच्योरिटी, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स मैच्योरिटी पीरियड इज ऑल्सो 5 years। दूसरा सेकंड ईयर में वो जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाता है, वो जो फंड्स कलेक्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग दैट इंटरवल पीरियड, वो फंड्स वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ताकि मैच्योरिटी जो उनकी इन्वेस्टमेंट की जो मैच्योरिटी है, उनके इन्वेस्टमेंट का जो रिडम्पशन होगा, दिस विल मैच विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द म्यूचुअल। आफ्टर 2 years जो इंटरवल पीरियड आएगा, उसमें वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द इंटरवल फंड दे विल गेट देयर मनी। इसी तरह से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि वो अपने रिटर्न्स पे, अपने फंड्स पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। Now we will see about the categorization of mutual fund. SEBI has advised to standardize the schemes categories and category as given below. Schemes would be broadly classified into following groups. जो म्यूचुअल एज पर सेबी डायरेक्टिव्स, एज पर सेबी गाइडलाइंस जो भी स्कीम्स बनाते हैं, वो नीचे जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें से बन जाती है। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप इज इक्विटी स्कीम्स। इसमें जो फंड्स इकट्ठा हो जाते हैं, पूल ऑफ फंड्स जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, विच इज वेरी पॉपुलर विद दोज who are ready to take real little bit higher risk, or who wants to create the wealth in the long term period. Here in equity scheme, here the funds are invested in shares and stocks with objective of long term capital growth with some income, which is the largest category of mutual fund। अभी what is the meaning of this equity scheme? इक्विटी स्कीम में जो फंड्स इकट्ठा हो जाता है, जो पूल ऑफ फंड्स बन जाता है, वो फंड्स नॉर्मली शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है with an aim to create the long term growth, with a aim to create the wealth
इन ए लॉन्ग टर्म पीरियड। एंड साथ साथ उसी में म्यूचुअल फंड जो है वो कुछ इनकम भी अर्न करता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और बाय वे ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इक्विटी स्कीम? एसबीआई ब्लू चिप फंड हो, यूटीआई टॉप 100 फंड्स हो, they are the examples of equity schemes. In equity schemes, a company is referred based on its market capitalization. मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जो है कंपनी के जो पेडअप कैपिटल है उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स है, सो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट। अगर हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। वेरी सिंपल डेफिनेशन, number of shares in the market multiply by the value of the share on that particular date, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा that will be the market capitalization। एग्जाम सिंपल बहुत है डेफिनेशन, लेकिन एग्जाम में इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। Market capitalization is the value of the stock which is arrived by multiplying the stock price, उस दिन की जो stock price है वो with company's outstanding number of equity shares, जितने shares कंपनी के outstanding है मार्केट में float है, number of shares multiply by stock value। There are, and on the basis of this market capitalization, total group of companies are divided into तीन categories। There are three main classifications। आप ये वर्ड हमेशा सुनते होंगे, जो कोई स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल आप कोई भी रेफर कर दीजिए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी डिस्कशन सुन लीजिए, उसमें तीन वर्ड जरूर आएंगे, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप स्टॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो अभी जो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, जो फर्स्ट 100 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लार्ज कैप में आ जाती है। टॉप 100 कंपनीज बाय इट्स वैल्यू ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लार्ज कैप में आ जाएगी। 101st टू 250th कंपनी जो है वो मिड कैप में आ जाती है। एंड अबो 251 ऑनवर्ड्स, 251 ऑनवर्ड्स जो सभी कंपनी है दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल कैप ग्रुप। आपको ये तीनों डेफिनेशंस वेरी इजी टू रिमेंबर, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अभी तक हमने इक्विटी स्कीम देखा था, नाउ वी विल सी द डेट स्कीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट स्कीम? डेट स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो डेट सिक्योरिटीज में किया जाता है विद द पर्पस दैट उनको रेगुलर इनकम मिल जाएगा उससे। सो दोज इन्वेस्टर्स हु प्रिफर टू हैव रेगुलर इनकम दे गो फॉर डेट स्कीम्स। जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, those who don't want to take much risk, they prefer for debt scheme investment in debt invest debt schemes invest in debt instruments of different maturities। Normally these schemes are adopted by those investors who prefers regular income। What is the example? Mirai Asset Dynamic Bond Fund, this is the example of debt scheme। एंड थर्ड इज हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम में जो टोटल पूल जो है, टोटल फंड्स जो अवेलेबल है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड सम पार्ट इज इन्वेस्टेड इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। So they invest in equity and debt instruments depending on the objective of the scheme. What is the example? ICICI Prudential Equity and Debt Fund। Next is solution oriented scheme। इट मीन्स आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट फंड स्कीम आती है, चिल्ड्रंस फंड की स्कीम आती है, इसी तरह से जो स्कीम्स आती है, व्हेन दे आर दी स्कीम्स आर फॉर्म बाय कीपिंग अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, स्पेसिफिक गोल इन माइंड, दैट इज नोन एज अ solution oriented scheme। In case of solution oriented scheme, there will be a specified period of lock-in। Examples of fund of the schemes are, so solution oriented scheme में there is a minimum lock-in period like in close-ended funds। वो लॉक इन पीरियड में एक बार आप फंड्स इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉक इन पीरियड के में आपके फंड्स लॉक हो जाते हैं, आप उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आपके फंड्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना है, यू कैन डू इट ओनली आफ्टर दैट लॉक इन पीरियड इज ओवर। तो इसमें फर्स्ट इज रिटायरमेंट फंड स्कीम।
An open-ended retirement fund solution-oriented scheme having a lock-in period of 5 years or till retirement of age, whichever is earlier. प्लीज ये सेंटेंस आप ध्यान में रख दीजिए, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है. In the same way, children's funds and open-ended, both are open-ended schemes. Open-ended fund for investment for children having a lock-in period for at least 5 years or till the child attains the age of maturity. यहाँ क्या है? Age of retirement. यहाँ age of majority, whichever is earlier. And other than that, there are certain schemes, there are index fund schemes are also there, or exchange traded funds are also there, ETF are also there. अभी तक हमने म्यूचुअल फंड के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ले ली, हाउ इट फंक्शंस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, ये सब देख लिया. नाउ वी विल सी हाउ बैंक कैन डू बिजनेस, म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय बैंक्स. Maximization of comfort for the customer, bank and a mutual fund is the basic principle to structure these types. जब कोई भी बैंक कोई म्यूचुअल फंड के साथ टाई अप करते हैं फॉर सेलिंग ऑफ द स्पेसिफिक स्कीम्स, उनका मेन पर्पस क्या है? बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस कस्टमर को मैक्सिमम कंफर्ट मिलना चाहिए, बैंक्स को भी मैक्सिमम कंफर्ट मिलना चाहिए, एंड म्यूचुअल फंड should also be in a comfortable position. It means there should be a win-win position for all the three parties, that is customer, bank and the mutual fund. So a scientifically structured business implementation model will reap the benefits for all concerned. Mutual fund distribution offers good scope for augmenting the fee-based income for bank. ये हमने already first slide में ही discuss किया हुआ है. Banks have the potential to expand the retail side of mutual fund investors, acting as a lucrative distribution channel. Banks have to the following strategy for banks have to do चाहिए या banks have to do या banks are adopting the following strategy for mutual fund business. First, product. कौन सा product बैंक launch करेगी? Banks with multiple tie-up should decide on products of different mutual fund based on their customer segments and time preference. बैंक जब भी म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, पहले वो अपने कस्टमर का सेगमेंट का एनालिसिस करेंगी, अपने कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करेगी, साथ साथ टाइम प्रेफरेंस कंसिडर करेगी, एंड ये दोनों चीजें कंसिडर करने के बाद दे विल गो फॉर द प्रोडक्ट टाई अप विद द म्यूचुअल फंड. जो प्रोडक्ट उनके कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होगा वही प्रोडक्ट के लिए वो अडॉप्ट करेगी, ताकि कस्टमर विल बी बेनिफिटेड विद दिस ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इशू is risk issue. Unlike fixed deposit of banks, mutual fund schemes carry capital risk and return risk. Fixed deposit में there is no capital risk, there is no return risk. लेकिन म्यूचुअल फंड में capital risk issue is there and return risk is also there. It means what is the meaning of capital risk? हमने जितना म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है. साथ साथ कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने रिटर्न्स मिलेंगे, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं. सो रिटर्न्स विल बी अनसर्टन, सो रिटर्न रिस्क इज देयर. So bank through their in-house research scheme, bank through their in-house research to identify schemes based on the risk profile of their customers. And selection of products with performance above the level of their benchmark indicates the benchmark indices will minimize the risk in a big way. So bank what will do? बैंक अपने इन-हाउस रिसर्च करेगी ताकि जिसमें उनको रिस्क फैक्टर ध्यान, जो रिस्क उनको लेना है वो कैपिटल रिस्क एंड रिटर्न रिस्क फैक्टर ध्यान में रख के कस्टमर को सेगमेंटाइज कस्टमर के सेगमेंट को अंडरस्टैंड करके वो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ताकि उनमें से जो उनको रिटर्न आएगा इट शुड गिव मोर देन द इंडाइसेस, स्पेसिफिक इंडाइसेस फॉर दैट पर्पज. Opportunities.
इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर्स टू क्रिएट द वेल्थ। ये हमेशा कहा जाता है, अगर म्यूचुअल फंड में आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू जनरेट योर वेल्थ फॉर योर सेल्फ। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू क्रिएट वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड। पेपर में काफी बार एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि कोई व्यक्ति ने अगर 1,000 रुपए की SIP फॉर लास्ट 10 ईयर्स ली है, उसकी वैल्यू इतनी बन गई है, विच इज गिविंग बेटर रिटर्न देन व्हाट ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो इसी तरह से इट्स a good opportunity for those investors who wants to create the wealth over a period of time. Next is people are to be considered. People are the driving force. People relate to both internal and external customers. Who are the internal customers? Internal customers comprises staff members who actually market the scheme, and external customers are target customers to whom schemes are marketed by their internal customers. So म्यूचुअल फंड की स्कीम के लिए जब बैंक डिसाइड करेगी, बैंक्स हैव टू banks have to the following strategy for mutual fund business. तो जब बैंक म्यूचुअल फंड के लिए स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी, तभी बैंक को अपने इंटरनल कस्टमर्स उनकी उनको किस तरह से वो ग्रूम करेंगे, साथ साथ जो उनके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, टारगेट कस्टमर्स हैं, उनके बारे में भी कंसीडर करना पड़ेगा। उनको ध्यान में रख के बैंक अपनी स्कीम डिसाइड करती है, अपनी स्कीम अडॉप्ट करती है। Geography is the most important factor. Geography of the bank is the foremost advantage for the banks and mutual funds in the distribution model. क्योंकि अगर कोई बैंक्स का आप अगर ये मैं पहले आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो स्कीम मेट्रो में सक्सेसफुल होगी म्यूचुअल फंड की, नॉट नेसेसरीली दैट स्कीम कैन बी सक्सेसफुल इन रूरल एरिया। इसीलिए बैंक को अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते वक्त देयर जोग्राफिकल लोकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा, वेयर इज देयर जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन इज देयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट they have to adopt the strategy for mutual fund product what they want to distribute. Geography of the bank, see, geography of the bank is the foremost advantage for the banks and mutual funds in the distribution model. Banks normally decides their distribution policy on the brand equity of the mutual fund in specific or across geographic boundaries, rural, semi-urban, urban, or metro, for better distribution efficacy. A properly graded geography strategy will propel a smooth, seamless customer penetration and sales value. हर एक एरिया में अलग अलग ब्रांड्स प्रिवेल होते हैं, तो बैंक को जब अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी तो उनको ये फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर एरिया में कौन से म्यूचुअल फंड की ब्रांड इक्विटी या इक्विटी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी, बैंक उसी के साथ ध्यान में रखेंगे, उसी के साथ अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ताकि because of their brand value, bank will be able to do the better distribution of the specific products. And if people are aware about the mutual fund brand also, then there will be a smooth and seamless and see there will be a smooth and seamless customer penetration, and वो जो है वो बैंक का सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देगा। अल्टीमेटली बैंक उसी की वजह से अपना पेनेट्रेशन बढ़ा देगा, अपना कस्टमर बेस बढ़ा देगा। Attribute. Features of products are designed while product structuring and investment objectives. It should be effectively communicated to the investing customers so that there will not be a customer dissatisfaction at the later stage. जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तभी जो प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे या जो प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे, उसको जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, उसी को इफेक्टिवली बता देंगे, ताकि एट लेटर स्टेज कस्टमर को कोई भी डिससेटिस्फेक्शन ना हो, कस्टमर बैंक को ब्लेम। इट मीन्स देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी while doing the mutual fund business. In addition to above, training to staff member and education to external customer plays a key role in mutual fund business. Abhi, what are the RBI guidelines on mutual fund business?
Bank shall not undertake mutual fund business with risk participation except through a subsidiary or joint venture set up for the purpose. In normal course में बैंक अगर इंटरनली डिपार्टमेंटली अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो रिस्क पार्टिसिपेशन बेसिस वाला बिजनेस नहीं कर सकती है. अगर वो रिस्क पार्टिसिपेशन, इफ बैंक वांट्स टू डू द म्यूचुअल फंड बिजनेस विथ रिस्क पार्टिसिपेशन, इन दैट केस उनको अपनी खुद की सब्सिडरी या अलग जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. एंड वो जो बिजनेस है वो बिजनेस उनको सब्सिडरी के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू करना पड़ेगा. बैंक शैल अंडरटेक एजेंसी बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी डिपार्टमेंटली. अगर बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑन एजेंसी बेसिस करना चाहती है तो अपने डिपार्टमेंटली या इंटरनली कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. लेकिन अगर बैंक इस तरह से करना चाहती हो तो बैंक को नीचे जो अभी 3 कंडीशंस दिए उसको कंप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट आर दिस कंडीशंस? No mutual fund unit shall be accepted from the secondary market or bought back from the customer for selling it to other customer. बैंक को 3 कंडीशंस कौन सी कंप्लाई करनी पड़ेगी? कोई भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बैंक जो है वो सेकेंडरी मार्केट से परचेस नहीं करेगी, एक्वायर नहीं करेगी. साथ साथ उनके जो कस्टमर्स हैं उनसे कोई भी यूनिट्स वो परचेस करके वो कोई और कस्टमर को सेलिंग नहीं करेगी, सेल नहीं करेगी. दैट इज फर्स्ट कंडीशन. बैंक हैज टू कीप इट इन माइंड, बैंक हैज टू कंप्लाई. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? Extension of credit facility to individuals against the security of the mutual fund unit shall be in accordance with the master directions on credit management. बैंक अगर कोई इंडिविजुअल को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के ऊपर अगर क्रेडिट फैसिलिटी देना चाहती है तो वो उसके लिए बैंक की अपनी क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी में मेंशन किया होना चाहिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मास्टर डायरेक्शंस ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट के बेसिस के ऊपर ही बैंक क्रेडिट दे सकती है, लोन दे सकती है. Purchase of units shall be at the customer's risk without the bank guaranteeing any assured return. जब भी बैंक कोई कस्टमर के बिहाफ पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेस करेंगे तभी बैंक ने कस्टमर को ये क्लियर कट बता देना है कि वी आर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन एट योर रिस्क. एंड बैंक उस ट्रांजेक्शन में रिटर्न्स के बारे में, इनकम रिटर्न्स के बारे में कोई भी एश्योरेंस नहीं देगी. अगर कोई बैंक म्यूचुअल फंड का एजेंसी बिजनेस डिपार्टमेंटली करना चाहती है तो उनको ये 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेगी, उनको कंप्लाई करना जरूरी है. तो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. बिकॉज आपके अगर कोई सीआईबी के फ्रेंड्स काम का हुआ, कोई अगर आपके फ्रेंड सीआईबी को अपियर कर रहे होंगे तो उनको बता दीजिए वी आर कंडक्टिंग रेगुलर क्लासेस फॉर सीआईबी, जिसमें ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट भी प्रोवाइड किया जाता है एंड केस स्टडीज के भी एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स है, ताकि पार्टिसिपेंट्स कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट. इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है. तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कलीग जो सीआईबी को अपियर कर रहे हैं उनको ये मैसेज कन्वे कर दीजिए ताकि वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं. तो नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया हुआ है वी विल गो ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर दैट. तो वी विल हैव ट्विन पर्पस फॉर दैट. फर्स्ट पर्पस, इसमें आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो वी विल बी एबल टू रिजॉल्व योर डाउट्स. एंड अनदर थिंग, दिस इज नथिंग बट द रिवीजन. अभी हम जब क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, आप अगर आंसर के साथ कंफर्टेबल हो तो प्लीज मेक द यूज ऑफ चैट बॉक्स. आपका आंसर आप उसमें से कन्वे कर दीजिए, वो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा. Now we will start it quickly. What is the purpose of para banking activities in banks? Banks में para banking activities का क्या purpose है? To decrease revenue, to simplify financial services, to increase the reach of banks and generate revenue, and to limit the reach of basic financial services. So correct answer is no need for me to explain you. C is the correct answer for this question. Anish Kumar ji, good to see you. Please continue this.
What are the three fundamental varieties of mutual fund at the basic level? See the words mutual funds at basic level. बेसिक लेवल पे म्यूचुअल फंड के कौन से थ्री फंडामेंटल वैरायटीज है? इक्विटी फंड, फिक्स फंड, पेंशन फंड, ग्रोथ फंड, स्पेशलिटी फंड, मनी मार्केट फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स, इंटरवल फंड्स, सेक्टर फंड्स, बॉन्ड फंड्स एंड टैक्स सेविंग फंड्स. कौन से हमने फंड्स देखे थे? growth fund, specialty funds and money market No funds. number. Growth funds, specialty funds and money market funds are the three fundamental varieties of mutual funds at basic level. So B is the correct answer for this question. Next question. What is the primary classification of mutual fund based on maturity date of fund? मैच्योरिटी फंड्स की जो मैच्योरिटी डेट है उसी के ऊपर किस तरह से म्यूचुअल फंड में क्लासिफिकेशन किया जाता है? B number, open ended, close ended. Yeah, open-ended and close-ended funds is the correct answer. No need for me to tell you in detail because we have already discussed it in detail. How are the prices of purchase and redemption of transactions are determined in a mutual fund? Many of you might be aware of this because आपका SIP चलता होगा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते होंगे, बट दैट प्रैक्टिकल नॉलेज विल बी हेल्पफुल टू यू. अभी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट होने की वजह से वो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेगा, जो आपको आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेंगे. सो किस तरह से परचेस एंड रिडम्पशन ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड की जाती है? दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next question. What is the future of interval funds? Interval funds is a very important fund from exam point of view क्योंकि इसमें कुछ काफी नई चीजें हमने बताई गई है. They have a fixed maturity date. They invest only in equity securities. They can be traded frequently. Units can be purchased only during a specific time period. So D is the correct answer. इंटरवल फंड जब लॉन्च किया जाता है तभी बताया जाता है कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे परचेज नहीं कर सकते हैं. ड्यूरिंग इंटरवल पीरियड ओनली you can purchase the unit. So D is the correct answer for this question. What is the primary advantage of economies of scale in mutual fund? Mutual fund में because of economies of scale, because of large volume of income, a large volume of investment, क्या एडवांटेज मिलता है? उनकी कॉस्ट कम हो जाती है उसकी वजह से. हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल, हायर रिस्क फॉर फंड मैनेजर एंड लोअर रिस्क फॉर फंड मैनेजर. ए, सी एंड डी आर नॉट करेक्ट. B is the correct answer because lower transaction cost for individual is the correct answer for this. अभी हमें ये बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि we have discussed a lot about this. Now we will go for true and false. Banks are, अगर हमारा as usual हम स्टेटमेंट देख लेंगे. अगर हमारा स्टेटमेंट सही है तो there is no issue on that. But अगर स्टेटमेंट सही नहीं है, in that case we will go for the correct statement. Banks are allowed to offer insurance and mutual fund services from their own product portfolio due to regulatory permissions. हमने already answer देखा हुआ है, but the statement is not the correct statement. We'll see what is the correct statement. Regulatory restrictions prevent banks. ये banks are not allowed, but banks are not allowed. यहाँ not word आपको add करना चाहिए. Regulatory restrictions prevent banks from offering certain services like insurance and mutual fund, etc., from their own products. However, bank can offer these services through agency arrangement with relevant service provisions. So our answer is false for this statement. An asset management company, AMC, is required to register with SEBI to operate mutual fund industry. This is the correct statement. AMC को, asset management company को अपना अब खुद को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है. सो आंसर इज करेक्ट. ट्रू इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Open-ended mutual funds have a specified maturity date and all units are redeemed on that date. No, open-ended name itself indicates
Open-ended, it means it will go on continuous basis. Whereas close-ended means this will be closed on a specified maturity date and all units are redeemed on that date. So our answer is false. It is not the correct statement. Open-ended mutual funds do not have a maturity date. Investors can buy or redeem units at the prevailing NAV at any time. This is for open-ended mutual fund. Next is interval funds in the mutual fund industry allow frequent trading of units similar to open-ended funds. This is not the correct statement. Correct statement क्या है? Interval funds during specific period only they can do the transaction. Interval funds in the mutual fund industry do not allow frequent trading of units, and investors can purchase units during a specific pre-decided time period, and redemptions are allowed at the current NAV during the specific period. No need for me to explain it in detail क्योंकि हमने already detail में इसके बारे में discussion किया हुआ है. Now next, what is the question? What is the primary objective of equity scheme in mutual fund? इक्विटीज म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी स्कीम्स है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ विथ सम इनकम, regular income and preservation of capital. Among these four, B is the correct answer. B हमारा correct answer है. So B is the correct answer for this. Next, how the companies are categorized in equity scheme based on market capitalization. Market capitalization के ऊपर equity scheme में किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है? इस कौन से कंपनीज हैं? लार्ज कैप कैपिटलाइजेशन, मिड कैप कैपिटलाइजेशन एंड स्मॉल कैप कैपिटलाइजेशन. एंड ये कैपिटलाइजेशन इज कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फुल मार्केट वैल्यू, फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन. So C is the correct answer for our question. What is the lock-in period for retirement fund scheme under solution-oriented scheme? Retirement fund scheme जो है उसमें lock-in period कितना रहता है? Normally it is 5 years or the date of retirement, whichever is earlier. 1 year, 3 years, 5 years or till the retirement age, whichever is earlier, or no lock-in period. तो C is the correct answer for this. एग्जाम में आपको यहाँ बताया जाएगा 1 year और till retirement age whichever is earlier, 3 years और till retirement age whichever is earlier, और 5 years और till retirement age whichever is earlier. इस तरह से आपको पूछा जाएगा. यहाँ स्पेसिफिक पर्पज यही है, मेंशनिंग हियर ओनली बिकॉज वी आर हियर टू डू द रिवीजन, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. दैट इज द रीजन यहाँ मैंने एक ही जगह क्लियर कट बता दिया है ताकि आप इसको ध्यान में रख सके, आपका कंफ्यूजन ना हो. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. What is the basic principle to structure tie-up for mutual fund business with bank? कि म्यूचुअल फंड बैंक्स के साथ जो टाई अप किया जाता है उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल यही ध्यान में रखा जाता है कि जो बैंक के अपने कस्टमर्स हो, बैंक हो और म्यूचुअल फंड हो, तीनों इसमें कंफर्टेबल हो एंड तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हो. तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फीस, maximization of comfort for customers, banks and mutual fund, quick returns to customers and bank, and exclusivity. So B is the correct answer for this question. What is the significance of geography of the bank in the mutual fund distribution model? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में बैंक की जो ज्योग्राफी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट डिटरमाइंस बैंक स्टॉक परफॉर्मेंस, it influences bank's credit rating, it impacts the effectiveness of distribution across different locations, and it is irrelevant in mutual fund business. म्यूचुअल फंड बिजनेस में तो बैंक की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी अगर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे देन वी विल बी एबल टू मार्केट इट इन अ बेटर वे. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. What additional conditions must bank comply with when undertaking of mutual fund agency business according to RBI guidelines? RBI guidelines के मुताबिक जब बैंक म्यूचुअल फंड का एजेंसी बिजनेस कैरी आउट करना चाहती है तब उनको कौन सी एडिशनल कंडीशन कंप्लाई करनी है?
Offering assured returns on mutual funds? No, they cannot have offered assured returns. Buying back mutual fund units? No, they can't buy back. Providing credit facility against the security of the mutual fund units? Yes, they can provide the credit facility by following the guidelines and acquiring mutual fund units from the secondary market. They cannot do this also. It means A, B, and D are not the correct answer. C is the correct answer for our question. नाउ वी विल गो फॉर ट्रू एंड फॉल्स. बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मॉर्निंग में भी हमने इसका एक मैराथन सेशन रखा हुआ है जिसमें हम रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिट विल डिस्कस. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल मॉर्निंग में भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर दीजिए ताकि यू विल बी एबल टू अपडेट योर नॉलेज और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. So debt schemes primarily targets investors seeking long-term capital growth with some income. This is not the correct answer. Equity schemes जो है वो normally long-term capital growth with some income का ध्यान में रखते हैं. So our answer is false for this. What is the correct statement? Debt schemes primarily target investors who prefer regular income and invest in debt instruments of different maturities. डेट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जिसको अलग अलग मैच्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट की जाती है. एंड जो इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम चाहिए, हायर इनकम चाहिए, नॉर्मली स्टेबल इनकम चाहिए, नॉर्मली दे प्रीफर फॉर डेट स्कीम. वेयर इक्विटी स्कीम्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किया जाता है विथ एन एम टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल वेल्थ एंड विथ सम रेगुलर इनकम. So next is solution-oriented schemes have no specified period of lock-in, providing flexibility for investors is not the correct answer. हमने already देखा हुआ है solution-oriented schemes जो है उनको कोई specific lock-in period रहता है ताकि उस period में कोई investor उसमें invest नहीं कर सकता है. So this answer is false. What is the correct statement? In the case of solution-oriented scheme, there will be a specified period of lock-in as seen in examples like retirement fund, 5 साल का lock-in period or retirement whichever is earlier, children's fund with a lock-in period of 5 years or until certain conditions. Next, no mutual fund unit shall be acquired from the secondary market or brought back from the customer for selling to the customer in banks, departmental agency business of mutual fund. क्या कह रहे हैं वो कि अगर बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस थ्रू डिपार्टमेंट के थ्रू एजेंसी बेसिस पे करना चाहते हैं, इन दैट केस कोई भी म्यूचुअल फंड का यूनिट वो सेकेंडरी मार्केट से परचेस नहीं कर सकते हैं या कोई कस्टमर से परचेस जो यूनिट कस्टमर ने परचेस किया होगा उनसे ब्रॉड बैक करके या बॉट बैक करके वो कोई दूसरे कस्टमर को बेचे. ये स्टेटमेंट सही है. तो आंसर इज ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट. The geographical location of the bank is not considered a significant factor in the distribution strategy of mutual fund business. Detail में हमने 2-3 बार discussion किया है. This is not the correct statement. Geography of the bank is a foremost advantage for banks and mutual fund in the distribution model. So this is the correct statement. With this, उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने डिस्कशन किया हुआ है आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन बिकॉज आपकी ये जो एक्टिविटी है दैट विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर. आपकी यही एक्टिविटी मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप इस इंफॉर्मेशन को आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं. इसी के साथ साथ आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस बाय प्रेसिंग दिस बेल आइकन ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगी एंड यू विल नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. आप अगर रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ लाइव क्लासेस देखते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज कन्वे योर क्वेरी थ्रू कमेंट बॉक्स और इन मेल आईडी so that we can reply it immediately. So with this, I wish you all the best. We will conclude our discussion here today and thank you very much.